Namaskar, Sat Sri Akal, good evening, and a very warm welcome to everyone at the Motherhood Club talk show. Under the Wealth series, we are going to be talking to Miss Neena Wagh. She doesn't need any introduction. She is someone who contributes so much to the well being of the society in her own ways. She has been on our platform where she shared her journey as a mother of two boys, of which one of them is a special needs child. But looking at the progress of that child, I would say I don't think he needs any special attention because he is so good and he is learning and carving his own path. I feel if God takes away one ability, it bestows many more abilities on these special needs children. Neena ji is also a documentary maker, a social activist, and works extensively for autistic people. She's the founder for A.L.A.P, which is assisted living for autistic persons, where she is trying to make a difference to the lives of the autistic humans and their parents for them to understand as to how these special needs kids or adults can live a life of dignity by learning some skills, by doing her research, some advocacy, and a lot about autism. April 2nd was Autism Awareness Day. We were to hold this session that day, but due to some reasons, we had to push this conversation. But I'm glad that we are doing this conversation today. We are at the moment live on Facebook, YouTube, and LinkedIn. And with this, I extend a very warm welcome to Neena ji. Neena ji, once again, welcome at the Motherhood Club talk show. Thank you, Ekta. Thank you. It's always a pleasure to be here on this. And I think you yourself, taken Motherhood Club to new heights. And I'm I'm a witness to your relentless effort to bring different topics that we as women deal in our day-to-day lives, and highlighting various aspects. So I think it's always lovely to interact on your platform and through your Thank you platform. so much. Thank you so much. I remember meeting you in 2019. Yes. And I think I must thank Marva Studios, Sushil Bharti ji and Sandeep Marva sir, that we had met on the writers meet, and I think soon again the writers meet is going to be held on the 23rd of this month. So, so Neena ji, you have been working extensively for autism awareness, for making these kids, these special needs human feel that they are equally a part of the society, a life of dignity, uh, you know, inclusiveness. But before I actually start questioning you, uh, there is this series that is on Netflix titled Good Doctor, where they show that this young boy, he's an autistic child and he's a doctor, and he has a special quality or a syndrome called Savant syndrome, which means his memory is so sharp, he has that capability to save people. And I got so glued on to that series that every time I saw that, I wished and prayed that I wish every child who is looked down upon because he or she is a special needs child becomes like this boy who is gaining respect for something that he does. I don't think that's a real story, but I wish that there are. And what I could read is that there are a few doctors who have a streak of autism, maybe not many. So to begin with, I think it is important that all of us understand what exactly is autism, because people have their own perception, their own mindset, and the kind of words that are used for either an autistic child or for ASD are extremely demeaning. And parents' acceptance is also not there.
So I think as a first, we need to understand what is autism, what is ASD, and perhaps move ahead from there. So, first of all, let me address, this good doctor thing. It's in a way it's good that through these kind of, whether it was Rain Man, whether it was My Name Is Khan, or Aapki Antara, and all these kind of handful of series which has come and brought the word autism to the consciousness of the masses. But on the flip side, it has put a lot of burden on us, parents, and we too have sort of cracked under the pressure of uh, having trying to find something, a savant quality in, so autism spectrum is a huge, it's autism. When you say autism, and if I bring you 10 people with autism in one room, you will find a very distinct, each of them very distinctively different from each other. But the common factors, which generalization is called, it comes under the developmental disorder, and which in a layman's term, it's social behavior disorder. They don't understand the social cues, and communication is a majorly affected characteristic among the autism population. Or they would have echolalia, or they would repeat the word, or they may take the language in a literal sense. Like, if you say, it's a very typical example we give, that if you say, oh, it's raining cats and dog, so an autistic person will expect the cats and dogs actually falling down Falling. from the sky. So they take the language in literal way. Like, I remember I was teaching my son to do brushing, and he was very good in brushing in one side. So I said, Amok, do it this side also. So he took out the brush and he actually doing it on the cheek. So that time I realized how literal they actually take, and how differently they view the world. So for me, it was an amazing experience, rather, I would say, fascinating experience, to understand my child who came with a different operating system altogether. So the more I started getting into his shoes, that I really wish that somebody will create a bodysuit of person with autism, that one day we could just get inside that bodysuit and spend the whole day. That would really, really give a very deep understanding to all of us. So repetitive behaviors as one thing. Stimming, which we call, is as, either flipping their hands, or they need to have something in their hands. So basically, because of their sensory overload, they try to control their environment, so they need to regulate it by doing something, either humming, or swinging in the chair, or having some repetitive motion, say, with, or their obsession with some one particular objects. Somebody may be very obsessed with fans, somebody may be obsessed with one particular toy, like my son at one point of time, and their fixation may change also. So at one point of time, my son used to just tear the papers to shred it, used to shred it into thin little slivers of pieces, and but that used to make him calm. And so whenever when he was upset, I used to give him a huge bunch of newspapers. So he used to sit calmly and sort himself out. So basically, these are sensory seeking methods for them. And in the earlier stages, this happens more because they need a lot of therapies, whether it's called occupational therapy or sensory integration therapies, and which sort of teaches them to regulate their environment and get more adjusted, because they may be hypersensitive or hyposensitive. So when we say hypersensitive, they cannot. There are too many information coming together. Like, if you're sitting in a room and you're writing, so there is a humming of the air conditioner, there is a traffic going down your window, there's a maid coming, there's a clanking of utensils in the kitchen. So we, normal average human mind, can shut
all the unnecessary, like if you're concentrate, you want to concentrate or listening on music, you will be able to shut everything else and you will be able to concentrate on that particular music. But these children, they need training, because for them everything is happening together. So you can imagine with that kind of sensory problem all the time. Now, if they go to a classroom setup with 40 children talking on their own level and sounds, how difficult it is for them to learn or even sit in that environment. So these are the day-to-day challenges with which these people with autism have to deal. So a lot of intensive therapies are required. World over, millions and dollars are being spent on to understand why autism is happening. And it is just वो अंधेरे में तीर वाली बात है अभी तक, whether it's genetic, whether it's environmental poisoning, whether it's high mercury or lead, all kind of theories. Earlier there was a lot of heat on MMR vaccines, which has been dumped that theory that it's not, it's been proven that no vaccines are. But the point is, today, if you just Google, the WHO say the ratio of autistic population is 1 in 100. So that makes around 1 crore 40 lakh, roughly, very roughly, in India. And Right. recently, we even a study came when we're talking about 1 in 46 or 1 is 45 or 1 in 54. And so that means we have an epidemic or pandemic of a different kind in our hands, and nobody is paying that much attention. So that's why we have this Autism Awareness Month, why we are giving so much of importance to it. So this is what it is right now. I mean, that's a huge number that we are talking about. Yes. And, the kind of awareness that one sees around, I think it's not even equivalent to anything. So I think there is so much and more that needs to be done. And as you rightly said, that since nobody knows what the cause is, the perhaps that is why the acceptance of it is also not there. Most parents are in denial that it cannot So happen to let my me tell you child. another thing about that. Even if parents accept it, we have to move, little beyond that, because just in 2016, the new RPWD, that's Rights for Person with Disability Act, came into being. So for the first time, the government of India included 21 new disabilities, and one of them was autism. So officially, autism knowledge is very new in India. Right. Although I have been involved with, and my generation parents have been involved very actively, and I think I give a huge amount of credit to all the parents advocate who have done uh, more than enough in their capacity to talk about autism and bring awareness. And but it has only percolated to certain level. You're talking about, sort of in the more four metropolitan cities, people who are woke, who are more social media savvy, are talking, and through these mediums, I'm very glad that because generally the autism world is tend to be very inward looking, because we are all advocates talking to each other, the stakeholders talking to each other. But if platform like yours, who come and actually ask and extend their hands, that is what is needed to actually percolate this awareness from a rudimentary level to deeper levels. So that is very much required down to the grassroots. Absolutely. And So, Neena ji, so you know, uh, when the lady goes through her 9 months of pregnancy, there are many scans and tests that are done. Before the 20 weeks of pregnancy, there are tests. Your genetic marking, your dual marking test is done for Down syndrome and other genetic disorders. So, isn't there a test yet being no, done not yet. where Not yet. not yet? Not yet for autism. Down syndrome, yes. I'm not sure about the cerebral palsy part, but many other. But so far, autism has not yet been uh, actually been diagnosed in the. But the point is, if I really go forward, the point is that
once the child is there, it's already there. So early detection, early diagnosis is very much required. That is missing right now. Because I remember somebody posted on one of the platforms that she went to the school and she saw a little girl, 3 years old. She was toe walking, she was hyperactive, she did not have eye contact, and she did not have the speech as compared to her fellow 3 year old. So they were definitive markers, at least to raise the red flags. And she went to the mother and she said that please have this thing checked. Mother was in complete denial. So through your medium, I want to say that I really wish everybody to have, uh, children, neurotypical, so-called normal children. But if this, uh, do not shy away from being a little vigilant about these, because the more you try to avoid these markers and you think that this is not going to happen to me, and I wish all of the world, a happy, healthy childhood and parenthood. But in case these are the symptoms, you have to keep an eye. And don't get over paranoid. But yes, so even the schools, I think a pre-screening, irrespective of whether the child comes with a label or not, should be done, so that everybody, it should be part of our system. Because when we're talking about such a huge ratio of autism population increasing world over, then it should people should not wait for themselves to be, see this thing. It should become a natural, standardized, sort of a process for every child, to see whether it doesn't matter. Don't worry about the labeling part. I mean, so for the second thing comes is that we have to remove the taboo, because I want to tell that autism is not a disease. uh, we, for the want of better terminology, we are calling it disorder. But if so many cases are happening, so who are we to say that this is a disorder and what we have is an order? You understand my point? That Right. maybe this is a nature taking its own course. I may be grilled for this statement, but what if, um, this is some kind of a human evolution going to another level, and we are not yet able to understand the process? Or maybe it is due to environmental hazards, and what if it is due to some kind of environmental poisoning? So as a collective masses, as collective citizens of the world, as collective um, uh, people, whether we are in government, whether we are in education, whether we are the parents, we have to keep our eyes and ears open as to, actually, rather than becoming fearful of it, we need to understand and take this thing head on. Okay, okay. So if these are becoming more and more, numbers are coming, what more can be done? Let's normalize few things like inclusion. Let's not label and look down upon these things. The In fact, I wanted to say, to all the Motherhood Club members, the regular mothers, that they should go back and tell their children to be more inclusive. They should not discriminate. Ki, oh, mama, he doesn't talk, so I can't talk. Make an effort. How many of your children or have any friend with disability? How many mothers? They should check. If on an average every child has, let's say, I'm giving a very very rough estimate, have say 20 to 25 friends, how many of them have a special need friend? Somebody with hearing disability, or somebody with visual impairment, or somebody with cerebral palsy? I don't see that. I mean, we should not be encouraging our children to take these people only as projects. That, oh, today we have a project, so we have to go and make friends with them. No, it should become a norm to have neurodiversity in our lives. Absolutely. I think I totally agree with you. What you're saying is an absolute right observation. And, this was something that
Monica and I, one of our team members, we were talking about this, that in order to make our kids understand the whole concept of inclusiveness, our concept of inclusiveness stops where we try and imbibe kids from the humble background, but beyond that, one is unable to do much because, uh, you know, we couldn't really pinpoint a particular reason, but because we don't see too many of them around, you know uh, perhaps they are also shielded by the parents. Even the normal kids are also shielded by the parents, and perhaps when they do get exposed to one, it's a shock for them. I remember, in our condominium, we had gone down, and I'm not too sure, but the child looked like a special needs child, was extremely hyperactive. And my daughter immediately responded that I don't want to play with him. He's doing all bad things. So I explained it to her. Maybe he's not doing anything wrong, but he's just try. That's his way of enjoying. So you observe, you see how comfortable you are with it, but don't outrightly say no to something. So I think that is important, that how well we are able to sensitize our kids. But I think before we sensitize our kids, it's important that we sensitize ourselves. We all have learned to sympathize if we see someone with special needs, but we haven't learned how to empathize with humans, because we've that label part that you said, we started labeling it. And I think that label, whether it is a disability by birth, or it is that it happens to you, in both the cases the acceptance is near zero. And I have first hand experienced this with my father. When he was in coma and we would take him around in a wheelchair, the way people would look at, how can you bring someone like this outside? He equally has had a right to, be out and meet people. And questions coming in a very sympathetic way, that what has happened, which I think is the, the human mind that is there. But you're very right. I think it's important that we all collectively work towards that inclusive environment. And Nina ji, before we go ahead, there are a lot of comments and questions also that are coming, so let me just take up a few. Sure. Shweta Sundar is saying that it's a cause which is very close to her heart. In fact, Shweta, I would want you also to perhaps connect with Nina ji. Shweta has written a lot of poems, for this cause, and some of them really, really touch your heart. And let me tell everyone that Nina ji is also an amazing poet. She writes amazingly well. Monica is saying that as parents, we don't want to accept any challenge with our kids. Exactly, Monica, what I was telling Nina ji. Himani is saying that she wants to know about inclusive education, and she has many questions about the autism spectrum disorders with their inclusion in mainstream schools. Yes, so see, that's why I was saying that a lot needs to be done. That's why I had suggested that what more can be done. So the right noises have been done, the law has come. In fact, I was just going through, and I would suggest all the people who are in the field of education or who want are looking for inclusion to read the new NEP, the National Education Plan. It's a beautiful document, let me say that. It is clearly laid out the groundwork for inclusive education for all the stratas. And it is even talking about, amazingly, it is also talking about the outreach program, like those, while education in the school is right for every child, but those who cannot fit into the regular classrooms, and so homeschooling will also be recognized by this. So that's a beautiful, It's a huge I think, a change. path breaking thing. But the thing is, like Absolutely. any other law, the laws are not taken to the public, and public also do not make enough effort to understand what the law is, because until unless you do not know, you're not going to demand. Because just other day, a parent, which happens like every second day, a parent of a 6 year old child called up that कोई सेंटर बताइए, मेरे बच्चे को तो एडमिशन ही नहीं दे रहे हैं वो लोग. तो आई सेड, नो, व्हाई आर यू इवन जस्ट एज्यूमिंग के नहीं दे रहे हैं, तो यू हैव टू मूव ऑन. Make a list of all the neighborhood schools, write down, tell them to give you in writing why they are not giving the admission. you know so what is happening right now is inclusion के नाम पे क्या होता है कि ओ
So they want to have, like, even for the regular students, they want the creamy layer of the. So okay, is he toilet trained, he doesn't hurt anybody, he's not aggressive, is he verbal, then we will take. That means स्कूल वालों को एफर्ट ना करना पड़े, सब कुछ मिल जाए उनको रेडी. Just like, we have this वेरी अनफेयर सिस्टम दैट आपका बच्चे का सर्टन परसेंटेज है, 85% है, हम तभी लेंगे. आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम रियली नीड्स एन ओवरऑल. एक स्कूल को चैलेंज होना चाहिए कि वो 60% या 50% वाले स्टूडेंट को ले, और उसको जो है 80% निकाल के वो बाहर निकाले. कैपेसिटी Absolutely. बिल्डिंग करना हमारे स्कूल्स की एज एन इंस्टीट्यूशन काम है. जैसे हमारे घरों में हमारी जो फैमिलीज हैं वो एक सोसाइटी की एक सिंगल इकाई या सिंगल यूनिट है. एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ में जिस तरह से मदर का हाथ होता है बहुत अहम, कि वो एक अच्छा नागरिक बना के उनको बाहर निकाले, उस घर से बाहर निकल के सबसे बड़ा जो हाथ होता है स्कूल का होता School. है, स्कूल के इकोसिस्टम का होता है. लेकिन हमारे स्कूल के इकोसिस्टम्स क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं. और अभी हम पीछे लोगों को भी, वी आर ऑल, मतलब वी कैन नॉट बी पॉइंटिंग फिंगर्स, वी हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी आवरसेल्व्स. व्हाई आर वी रनिंग आफ्टर द स्कोर्स, व्हाई आर वी रनिंग आफ्टर के हमें इसी स्कूल में डालना है. तो स्कूलों में वो फिर कंपटीशन में वो एक प्रेशर आ जाता है, तो फिर वो कट आउट रेट्स निकाल देते हैं विच आर अब्सर्ड. सो वी आर ऑल इन अ क्वागमायर. हम एजुकेशन किस लिए चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? क्या उस एजुकेशन से हम खाली एक कॉम्पिटिटिव रेस में ही घुसना चाह रहे हैं? तो फिर रेस तो फिर रैट रेस ही होती है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. आई वांट टू शेयर टू एग्जांपल्स हियर, नीना जी. uh, another member of our club, she also is a mother to an autism child. She also, had put it on the group, on one of the groups where I read that I am looking for school where my child will get admission because the typical school is not giving admission. And I remember hosting the team of Balwant Rai School, which is a model kind of a school which has, schools for both kind of children. And the head of the department, or the school head who was there, she very clearly said what you are saying, that every teacher has to be trained to be a special educator, and एब्सोल्युटली. vice versa, because only then, will you be able to actually understand the true potential and the capability of the child. And another example that I want to share, we recently had gone, along with a few other teachers, we had gone to a school where kids from humble background study, and there was this one child who could not clear her entrance exam for admission in class 6th. So the principal said that she didn't clear the exam, so she cannot get admission. So obviously, her other two siblings got admission, but so the parent obviously was totally frightened. So was the teacher. So all I suggested to the principal was that, sometimes kids know it, but they fear exam. How about giving her that one chance? Either you take an oral exam, take a viva kind of a thing, or give her one more week to prepare. Now she knows what the pattern is. She perhaps may be able to perform. And I'm so happy to share that the principal was kind enough to permit that. And this girl actually cleared that exam. Amazing. And See, she, the thing is that the let me tell you about inclusion. Inclusion starts from here. एंड इसमें मैं रेगुलर मदर्स को तो मैंने अपील करी है, बट मैं आपको अपने मदर्स की भी बात बताती हूँ कि हमारे में भी क्रीमी लेयर्स हैं. एंड आई होप इस माध्यम से वो बाकी लोग भी के पास ये मैसेज पहुंचेगा, बिकॉज आई एम sort of a little notorious for having a plain speak. लेकिन हमारे में भी एक क्रीमी लेयर है कि जी हमारा बच्चा तो हाई फंक्शनिंग है, आपका बच्चा लो फंक्शनिंग है, हमारा बच्चा आपके साथ नहीं बैठेगा, लेट्स ही पिक्स अप द मैनरिज्म ऑफ योर चाइल्ड. फिर हमारे बच्चे के सामने आप बिल्कुल बात मत करिए, बिकॉज ही डजंट वांट टू बी लेबल्ड. मैं कहती हूँ कि आप हमारी फ्रेटर्निटी में जो हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं, बल्कि उनमें ज्यादा सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, उनमें ज्यादा एम्पैथी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड देयर ओन फेलो ब्रदरन. तो वो मुझे नहीं दिखता है, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे जब हमारी अपनी फ्रेटर्निटी में ये डिस्क्रिमिनेशन है? तो मतलब ये एक बेसिक नेचर है, हम हर चीज में डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हम किसी एक बेहतर आइडेंटिटी की तलाश में ऑल द टाइम वी आर कॉन्स्टेंटली देयर.
और अपनी जब बेहतर आइडेंटिटी नहीं मिलती है, तो हम दूसरे की आइडेंटिटी को थोड़ा नीचा करके लगता है कि हम थोड़ा बेहतर हो गए हैं। तो ये जो एक हमारे जो रैम्पेंट जो सिकनेस है इस तरीके की सोच की, इसको हम सबको तब्दीली लानी पड़ेगी। और इसलिए इस तरीके की जो टॉक्स है ना, ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम अपने आप को झकझोरें एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, कि इंक्लूजन घर से शुरू होगा पहले। और मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द ऑटिज्म केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि भाई उनको सेंसरी प्रॉब्लम होती है, उनको लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको भूख भी लग रही है, उसको सारे इमोशंस भी वही हो रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। जो सोचिए आप बेसिक, आपको अगर मैं बोलूं एकता जी, कि आपको सिर्फ 5 वर्ड दिए जाते हैं, उन 5 वर्ड्स के साथ आपको अपना सारा दिन निकालना है, आपको घर से बाहर भी जाना है, आपको 40 बच्चों के साथ क्लास में बैठना भी है, आपको टीचर को अपनी बात समझाने की कोशिश भी करनी है, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 वर्ड्स है वोकैबुलरी में। बाय द टाइम यू कम बैक, आप या तो अपना बाल नोच चुकी होंगी, या आप 2 को धक्का मार चुकी होंगी, या आप 2-3 प्लेटें गिरा चुकी होंगी, झुंझला के आप पैर पकड़ के आप रो चुकी होंगी। और ये इन बच्चों के साथ रोज होता है या जिंदगी भर होता है। तो एक तो होता है कि भाई आपको एक डिसऑर्डर का एक लेवल है, चलिए जी आप उसके लिए अटेंशन सीख करने के, अटेंशन बढ़ाने के लिए आप दवाई भी दे रहे हैं अपने बच्चे को, आप थेरेपीज भी दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो नुकसान कर रहा है उस बच्चे की जो कैपेसिटी बिल्डिंग को जो स्टंट कर रहा है, वो पेरेंट्स का अप्रोच है। क्योंकि वो बोलता नहीं है, लेकिन आपको ये लगता है ऑटोमेटिकली कि ये सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली उसी के सामने उसकी डिसेबिलिटी को कॉन्स्टेंटली यू बिकम द रिमाइंडर क्लास में उसके टीचर, लेकिन ये तो बोलता नहीं है, ये तो सारा दिन उछलता रहता है, देखिए ना। सो एवरीथिंग इज बिकम योर स्टोरी। बच्चे का पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल एक दरकिनार कर दिया जाता है। अब इन सब चीजों के साथ जब वो बड़ा होता है, तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए, उसका डिसऑर्डर वाकई में डिसीज बन जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, एक फेलो ह्यूमन बीइंग जो दूसरे ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट करता है, जब वो भी डिनाई कर दी जाती हैं, तो ऑटिज्म में केसेस बिगड़ जाते हैं। अदरवाइज उनमें भी वही क्षमता है जो आप में और हम में है, सिर्फ उनको सिखाने का या उनके साथ शायद पेशेंस हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनके पास ये डिसेबिलिटी। आप एक किसी डायबिटीज वाले को बार बार मिठाई ठूसते जाइए, मिठाई खिलाते जाइए, तो वो तो उसके लिए गलत है ना। आप जो जिसको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आप उसको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ असिस्टेड डिवाइस नहीं दे रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव जरिया नहीं दे रहे हैं उसको सुनने का, समझने का, कम्युनिकेट करने का, तो वो तो केस बद से बदतर होगा ही होगा। तो एक्सेप्टेंस, और ऊपर से क्या है कि हमारे कंट्रीज में बहुत सारी एक जो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग है, उसमें ही बहुत जद्दोजहद है। तो हम में पेशेंस ही नहीं है, हम हर चीज को फिर, ऊपर से हमारी सोसाइटी बड़ी फेटलिस्टिक है। तो ये तो हमारे सबके पिछले जन्मों के कर्म है। तो अगर पिछले जन्म के कर्म अगर हम मान भी ले ऑन द फेस वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट इज योर लाइफ टेलिंग यू, कि भैया इस कर्म, इस जन्म में सुधार लीजिए कर्म, आप इस जन्म में भी वो कर्म को और बिगाड़ रहे हैं। अगर आपको आपकी जिंदगी में कोई एक स्पेशल नीड बच्चा आया है, तो ना खाली आपका परम धर्म है कि उसके साथ आप मेहनत करें, आपके पड़ोसी का भी धर्म है कि आपकी उस मेहनत में आपको साथ दे। तो ये कलेक्टिवली काम है। किसी अगर एक, जब हम बोलते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज द चाइल्ड, वो विलेज कहाँ है? Why is a mother or a parent or a family is left alone with that child? तो हम जो बाकी चीजों को तो जो हम भरपाई कर सकते हैं, वो क्यों हम डिनाई कर रहे हैं? जब तक ऑटिज्म एब्सोल्युटली। का इलाज आएगा, उसके बारे में पता चलेगा, गवर्नमेंट्स और राइट्स देगी, वो तो देगी। आपको कौन रोक रहा है? आपकी ह्यूमैनिटी के लिए तो आपको गवर्नमेंट आके नहीं बताएगी ना, कि आप एक फेलो ह्यूमन बीइंग को वही इज्जत दीजिए, वही कंपैशन दीजिए जिसकी आप खुद उम्मीद करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक वो जो सेंसिटाइजेशन है, वो लर्निंग की जो द एम्पैथी एस्पेक्ट, आई थिंक वो एज पेरेंट्स हमें वो करना बहुत जरूरी है। एंड बोथ दी फ्रिटर्निटी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, एंड दैट हैज ऑल्सो बीन माई एक्सपीरियंस दैट द इंक्लूसिवनेस कैन नॉट बी अ वन वे
Yeah, they say absolutely. it takes two to tango. So both sides have to accept the special needs child should be permitted, using word permitted for a lack of a better word, with the regular kids, and so should be the other way also. Why differentiate? A child is a child, the way we accept other kids in our life, but why are we not willing to accept? And I think that uh, denial का जो एक चीज है, I think that emotion is so strong that people fear telling someone that maybe there is a problem, because that, when you tell someone, the other person feels that you are trying to demean that person by telling them that, look, there is some challenge or an issue in the ability of the child. वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा, द टैबू दैट इज देयर, which is in general being created. And I think school, these help groups, they really need to work hand in hand. My daughter, the school that she goes in, Nina ji, I was very happy to see that in the induction program, it wasn't just the teachers, it wasn't just the principal, but even a counselor, the special educator, they were all there to talk to the parents, to give them a bit of a perspective as to how we as parents can deal with kids. So I think that change is happening, but at a very slow pace. Many schools yet need to work. They all say that we have a special educator, but that's just for saying, they're not actually there. So those changes have to be brought in. And as you mentioned, that acceptance is coming slowly and it is being involved in the NEP, and the government has started to recognize, maybe that would make a difference. But yes, I agree with you. Why wait for the authority to tell us to do what we have to? Why can't we be sensitive towards them? Why can't we uh, extend our support, which we normally do, right? If a lady is traveling with a child in a train, and if she's struggling, we help कि अच्छा ठीक है, लाइए हम आपकी help कर देते हैं. But the moment they will see that it's a different situation, there is a special needs student, everybody backs off. Perhaps the fear to handle that situation, perhaps Yes, the definitely. knowledge, Yes. knowledge is not there, the fear is there. डर लगता है लोगों को, because they are not used to that flapping activity or that sound that these kids make. They are not used to that. So there is so much of advocacy that's being done. I want to talk about that, but let me read a few comments that have come. uh, Himani is saying that if any person with myopia or diabetes, he or she is not diabetic or myopic, we don't address them like that. कि, oh, वो देखो एक diabetic इंसान जा रहा है. Why do Absolutely. we do that 100%. with someone who has autism? Payal Talreja is saying autism is so poorly understood even in schools, even by teachers, and we really cannot work towards inclusiveness unless we educate and create awareness. She's also saying that she's had the privilege to work with both children and parents, and I think it's time people celebrated the gift of autism. I remember writing somewhere that autism actually shows us the tremendous reach and scope of the human brain. I have come across many fabulously talented people. Unfortunately, we are still trying to fit square pegs into round holes. Payal is also a doctor by profession, by education rather. She had moved out. Mukesh Bhatnagarji is saying, yes, Ninaji, this has become human tendency in general, and over parenting is becoming a bane. Payal again is saying that it's true, Ninaji, but education and sensitization of society is critical. There are Himani is saying that in Madhya Pradesh there are very few school like A.L.A.P, and that too in big cities only. Himani, exactly what Ninaji was saying, that awareness is only happening in those metropolitan cities, where there are many and more educated people, the so-called educated people, but nobody is really I going to the would grass. suggest Himani and Payal, you said that the lady, there are two educators, I believe, here. I just have a suggestion through this medium is that if you're a teacher, create a series of awareness building on what is NEP saying, National Education Policy is saying. Start talking in your local districts. Reach out to the education ministers, reach out to the whoever is the district level education officers, reach out to the schools, because I remember
around 15 years back, I had made a list of schools in West Delhi where I was staying, and me and couple of other parents. That time I had formed a parents group, advocacy group. We had knocked each school, and I'm talking about 15 years back, जब राइट टू एजुकेशन आया भी नहीं था, मैं तब की बात कर रही हूँ. We had told them that there is this NGO who's struggling for space, but she has the right know-how to teach the special need children. You have this grand infrastructure, you have the bandwidth to include. Why don't we do the partnership? Why don't you let this NGO come and make a special section in your places and have a good healthy partnership? उस समय पे किसी ने हमें अंदर नहीं आने दिया था, लेकिन तब से अभी तक में 15 साल में काफी चेंजेस आ गए हैं. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड के एवरी स्कूल इट्स मैंडेटरी टू हैव स्पेशल एजुकेटर्स. नाउ द ऑनस इज ऑन द पेरेंट्स आल्सो. डू नॉट टेक नो फ्रॉम एनी स्कूल. हम लोग यहाँ तक एडवोकेसी करते करते आए हैं, हमने बहुत पापड़ बेले हैं. आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के लिए मैं और मेरे फेलो पेरेंट्स एंड लॉट ऑफ जो एनजीओ थी जो एडवोकेसी में थी, हम लोग ने धरना भी दिया जाके. सो यू नो, डोंट बी एन आर्म चेयर एक्टिविस्ट. सोशल मीडिया पे बैठ के खाली बोलने से काम नहीं बनता है. गेट डाउन टू द ग्राउंड एंड गेट योर हैंड्स डर्टी. जाइए, एफर्ट करिए, स्कूल्स में जाइए. और अगर आप डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, देन ऑनस इज ऑन यू. नहीं, जब तक जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं अपने सोसाइटी के, जब तक वो अपना हक नहीं मांगेंगे, उनको नहीं मिलेगा. क्योंकि हमारी बहुत डाइवर्स नीड्स वाली कंट्री है. वी हैव अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री जहाँ पे हमारा अभी भी कास्ट के लिए हमारी मारा मारी है. इतने सालों के रिजर्वेशन के बाद भी, इतने रूल्स के बाद भी डाउरी डेट्स आज भी हो जाती हैं. लड़कियों को घर से भाग के शादी करनी पड़ती. मतलब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं और सब अपने अपने फील्ड में लगे हुए हैं हक मांगने के लिए. तो आप कहीं भी बैठी हैं, छोटे शहरों में बैठी हैं, आज तो सोशल मीडिया का इतना आउटरीच है कि आप एक क्लिक ऑफ द बटन, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है. अगर इस इंफॉर्मेशन को हथियार बना के अगर हमने इस काम को स्पीड अप नहीं किया, तो फिर हम भी जिम्मेदार है फिर. क्योंकि अगर आप एक उंगली दुनिया की तरफ कर रहे हैं, तो 3 उंगली तो आपकी तरफ भी जा रहे हैं, और एक अंगूठा भी खड़ा हुआ है जो आपको ठेंगा दिखा रहा है कि मैं कुछ जो नहीं होने वाला है. अगर दूसरों को दिखा रहा है तो आपको भी दिखा रहा है. तो मतलब मुझे लगता है कि 3 C's में भी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि कंपैशन, कम्युनिटी सर्विस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 चीजों को ऊपर सबको काम करना चाहिए. कम्युनिकेशन, जैसे आप और हम डायलॉग कर रहे हैं आज इसके बारे में, हर तरीके के टैबू सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम डिस्कशन थ्रेडबेयर हो रहा है. ऑटिज्म के ऊपर भी हो रहा है. ये महीना नहीं, जिंदगी भर हम तो वी लिव ब्रीथ ईट स्लीप ऑटिज्म, बिकॉज हम तो पेरेंट्स हैं. लेकिन अगर ये पूरे जन समुदाय में, पूरे जनमानस पे, पूरे उस पे, नॉट ओनली ऑटिज्म बट एनी काइंड ऑफ इज्म की जो हमारी जो लिमिटेड बॉक्स आइडियाज हैं, उनको हम मिटाने में सब जने जुड़ जाएं, तो हमारी कंट्री इज द बेस्ट प्लेस टू बी. क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ, अगर हम लैक करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में या माइंडसेट में, तो हमारे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे लोग. अगर आज हम 15 साल से, मैं 20 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि एटलीस्ट इन दिल्ली एनसीआर हमारी पेरेंट कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है. अभी हमारी एक फेलो पेरेंट ने यूडीआईडी के लिए हमसे बात करी, नहीं तो सिविल हॉस्पिटल्स में धक्के खाने पड़ते हैं. हम लोगों ने उनसे बोला, स्पेशल उन्होंने कैंप लगाया, तो ये एक तरीके का रिले वर्क था. उन्होंने बोला, नीना जी आप बाकी लोगों को स्प्रेड करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए. मैंने सबको इकट्ठा किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हम लोग गए. जो काम के लिए 1-1 महीना लग जाता, हमारा 1 दिन में वो हो गया. बस शोज कि हमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करना चाहिए. कम्युनिटी कंसोलिडेशन करने का टाइम है. वो हमारी मांगे पूरी करो, खत्म कर दीजिए. हमारे दायित्व क्या है, उनके ऊपर भी तो अब हम लोग फोकस करना शुरू करें. आप अगर पेरेंट हैं तो आप अपना हक मांगिए. आप अगर पेरेंट हैं तो आप दूसरों को सेंसिटाइज करिए. और अगर आपको जिंदगी में कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कम्युनिटी सर्विस शुड बिकम मैंडेटरी इन आवर कंट्री. जैसे कई देशों में मिलिट्री सर्विस का मैंडेटरी है, तो उसमें तो क्या ही करते हैं लोग, एक दूसरे को मारना सीखते हैं. कम्युनिटी सर्विस मैंडेटरी हो जाए तो लोग एक दूसरे को जिंदा रखना सीखेंगे. And people will learn how to treat each other as a human rather Yes, than looking yes.
एंड you इट know शुड बिकम as मैंडेटरी, नॉट एज अ जस्ट अ प्रोजेक्ट नंबर लाने के लिए। hmm, ये आपकी जिंदगी who का मतलब, अगर हर कोई आदमी अपने अलावा, अपनी इमीडिएट फैमिली के अलावा दो फैमिली के बारे में भी कुछ बिल्कुल सेल्फलेस सोचे, तो हमारी जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाए। और ये इतनी सिंपल चीज है, और इसको लोग मानने को तैयार नहीं एंड वही इसको मैं अगर एक टेक्निकल टर्म दूं नीना जी, तो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में दिस इज कॉल्ड द बटरफ्लाई इफेक्ट। है। एब्सोल्युटली। आप किसी के लिए कीजिए, वो आगे किसी के लिए करेंगे, ऐसे करते करते कहते हैं ना, वेट एक फॉरवर्ड, और एक वेट ग्यारह फॉरवर्ड। ग्यारह से you will move forward, and perhaps we will be able to actually We achieve the are whole actually, the concept. change is there, but if you Change is want to there. speed it up, then you have to act also. Absolutely. I Really think, act on the time ground. is done that we just talk about it. We need to action it. And जो आपने बात की about, community service, I think मुझे ऐसा लगता है this might not be related to autism awareness, but I think more than community service, I think people need to know how to live in a community. Living, Absolutely. the community living as a concept, इट्स कंप्लीटली गॉन। वो पहले जमाने में होता था ना कि एक के घर में अगर कोई परेशानी थी या शादी थी, दैट वाज द परेशानी और द वेडिंग ऑफ दैट इंटायर एरिया। आज मी, माई सेल्फ एंड आई, एकता माई जी, मैं हाउस। इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, मैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे ही काम कर रही हूँ पिछले 10-15 सालों से। मैं पैन इंडिया बेसिस पे सब पेरेंट्स को बोल रही हूँ कि दे शुड कम टुगेदर, फॉर्म न्यू फैमिलीज, रीडिफाइन व्हाट फैमिली मीन्स टू यू। व्हेन जब हमारे तो देश से वासुदेवाय कुटुंबकाय की जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको क्यों नहीं इम्बाइब करते हैं? तो इनफैक्ट जो मेरा अलाप का जो जो फिलोसफी है, मेरे को बचपन से जॉइंट फैमिली का बहुत शौक था। मैं और मेरा भाई, छोटी फैमिली है हमारी, बट मुझे ये लगता था, आज मेरे फैमिली में 8 बच्चों को देख रही हूँ, और 8 बच्चों की जो मदर्स हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है, वो भी सांस ले पाती हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, हम लोग मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, एक रिलैक्सेशन है कि हम लोग अब एक नहीं है, 8 है। ये छोटा सा उत्तरदायित्व अगर एक पेरेंट ने मैंने ले लिया है, तो ऐसे सोचिए कि ये आपने जो बताया बटरफ्लाई इफेक्ट, किसी भी पेरेंट को ये चिंता करने की जरूरत ना पड़े कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को कौन देखेगा। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, और मेरे साथ जितने लोग जुड़ सकें, जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं वो जुड़ सकें। यू नीड नॉट बी, ह्यूमन बीइंग इज नॉट सपोज टू लिव अलोन। नहीं तो हमें और और किसी भी स्पीसीज में क्या फर्क है? हम क्यों दम भरते हैं मानव जाति होने का? जब तक कि हम में कॉन्शियसनेस है, हम में विवेक बुद्धि है, हमारा एक सोल पर्पस कुछ तो होगा ना, कि रहना, खाना, पीना और कमाने के अलावा भी तो कुछ ध्येय है हमारी लाइफ का। व्हाट इज दैट? इट्स प्रॉब्ली रीचिंग आउट टू अदर्स, दैट एक्चुअली propels your growth, more. एब्सोल्युटली। नीना जी, मुकेश जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट isn't a need to review B.Ed and M.Ed system? Is there a need to do Absolutely. that? उसी में तो प्रॉब्लम नहीं है कहीं, the way our teachers are trained, the way they are, coming, Absolutely. whether it is for the neurotypical or for the special needs children, does नहीं नहीं, the बीएड whole जो रेगुलर है, देखिए ना, वही आप देखिए, हमारा डिस्क्रिमिनेशन ही यहाँ से हो गया है कि ये बीएड है तो ये रेगुलर बच्चों के लिए है, ये स्पेशल एजुकेशन है तो ये स्पेशल स्पेशल एजुकेटर्स रेगुलर को नहीं पढ़ाएंगे, रेगुलर वाले स्पेशल। आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया यहीं से। जो अभी जो कोर्सेज आ रहे हैं उनमें जितनी तरीके की डिसेबिलिटीज हैं, चाहे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, फिजिकल लोकोमोटिव डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस का एक चैप्टर मैंडेटरी हो जाना चाहिए, so that every teacher is equipped to handle and address and understand the neurodiversity. और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट के इनफैक्ट अगर अभी नहीं भी आया है तो स्कूलों में इसके बारे में वर्कशॉप्स मैंने खुद करी हैं। मैंने अभी कई स्कूलों में मैं पिछले 1.5 साल से मैंने इसी तरीके की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करती आ रही हूँ, एंड स्कूल्स आर आल्सो ओपनिंग। बट ये है कि हमको अगर स्पीड अप करना है तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है, बस मैं तो सिर्फ शिकायत कर दूं और कुछ हवा में हो जाए और वो अपने आप बदल जाए। तो ये मेंटालिटी से हमें निकलना पड़ेगा, हम सबको भागीदारी से काम करना पड़ेगा, डिमांड we करनी all have पड़ेगी, to take the onus? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो तब तक सोती रहती है जब तक कोई डिमांड ना करे। हमारी मजे की बात है, डिमांड ही नहीं करते।
शिकायत ही नहीं करते। अरे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि अरे सरकार भी तो हम और आप जैसे लोगों से बनी है। एंड आई हैव इंटरैक्टेड, इनफैक्ट जो अभी के जो मैं आई मस्ट से कि मैं आईवीएस अधिकारियों से मिलती हूँ, मैं आईपीएस के बैचेस से मिलती हूँ, एंड दे आर फार मोर सेंसिटिव एंड सेंसिटाइज देन द पीपल वी मेट 20 years बैक। तो हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, अलबत्ता ठीक है पॉकेट्स में इवॉल्व हो रही है, लेकिन हो रही है। और उसके पीछे आपके और हमारे जैसे लोगों का जब एफर्ट्स चलता रहेगा और लोग इसमें जुड़ते रहेंगे कि हम इसको अब मेन स्ट्रीमिंग हर चीज को कर देंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी सभी के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, तो हिमानी पूछ रही हैं कि क्या आप गाइड कर सकती हैं कि अलाप की तरह का एनजीओ या स्कूल किस तरह एस्टैब्लिश किया जा सकता है? शी हैज़ सम प्लान्स टू वर्क ऑन समथिंग लाइक दिस। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अलाप इज नॉट अ स्कूल, अलाप इज अ फिलोसफी। मैं आई टेक ग्रेट पेन कि ये ना इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर की हमें जरूरत थी बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली माई चाइल्ड बट सम अदर पीपल ऑल्सो। तो इसलिए मुझे एक ट्रस्ट मैंने बनाई जिसका नाम अलाप है, दैट इज असिस्टेड लिविंग फॉर ऑटिस्टिक पर्सन्स। इट्स अ रेजिडेंशियल मॉडल वेयर 18+ वाले जो यंग अडल्ट हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली कैसे जीना है वो सिखा रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में सबके पेरेंट्स की ये है कि जब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो काम आप और हम, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं या जो हमारी कैपेसिटी है, हम उन सब पे काम करते हैं उनके साथ विद अलोंग विद द ट्रेन्ड स्टाफ जिनको मैं लाइफ कोचेस कहती हूँ। एंड आई हैव पार्टनरशिप विद अदर एनजीओ जो कि एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं। और तो ये नहीं है कि कहीं दूर दराज शहर के बाहर हमने कहीं इनको रख दिया है। दे लिविंग इन द मेन स्ट्रीम, लर्निंग एंड बीइंग सीन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल वो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेटेड होते हुए वो अपना काम सीख रहे हैं। तो मेरा काम ये है। इस सिलसिले में आप कभी भी मुझसे मिलना चाहें, एकता जी के माध्यम से आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स डिटेल वगैरह ले सकते हैं। And I'll be more than willing because I have been helping many parents to come together, and in fact 2-3 models have come up based on A.L.A.P's philosophy in 2-3 different places. More and more parents are coming and talking about it, and why not, Himani, I'm available anytime you want to talk to me. श्योर एंड हिमानी, आपसे इनफैक्ट मैं स्कूलों टच में, करूँगी। स्कूलों की बात जब कई लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में बोली, ये एक नॉर्म होना चाहिए हर एक स्कूल में। स्पेशल सेक्शन होना चाहिए और उसमें बच्चों को प्रिपेयर करते जाए कि हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हों कि मैथ्स की क्लास में न्यूरोटिपिकल अपने एज ग्रुप के साथ बैठ सकें, तो उनको वहाँ एक्सपोजर दीजिए। कई हो सकता है प्ले में स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो उनको दीजिए, लेकिन स्पेशल सेक्शन उनको अलग से चाहिए हो, तो ये मिक्स मैच करके आप करिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जी, उसमें डिनाई यही क्यों करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये गीता मैम आई थी बलवंत राय स्कूल से, शी आल्सो सेड द सेम थिंग कि जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं उनमें भी तो कई इनेबिलिटीज होती हैं किसी एक लर्निंग फील्ड में या डिसेबिलिटीज किसी कितनी है। सब्जेक्ट में। बिल्कुल। Like there could be a phobia for maths, there could be a phobia for language, तो why you know उस केस में हम उनको एक अलग से ट्रीट करते हैं, बट जिनकी दूसरी टाइप की इनएबिलिटीज होती है उन्हें एक अलग तरीके से करते हैं। लाइक आई थिंक यू नो डिसलेक्सिया, जब वो मूवी आई थी तारे जमी पर, पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट मीन्स, but it is again it's not a disease that the child had, it was an inability to be able to read और राइट एस्पर्जर्स है, आपका डिसलेक्सिया है, इन सब चीजों के। सो आई थिंक नीना जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि देयर शुड बी वेरी फोकस्ड कॉन्वर्सेशंस that need to happen around these subjects on a regular basis. एक Schools, मैं बात कहना चाहूंगी स्कूल्स के लिए कि हमारा जो स्कूली एजुकेशन सिस्टम है वो फियर बेस्ड सिस्टम है, एंड फियर के साथ शेम अटैच किया गया है। शेम, फियर ऑफ फेलियर, उसके साथ शेम को अटैच कर दिया गया। ये इतनी दर्दनाक बात है। हमको कॉन्शियसली इस आ, सोच को ही हटाना है कि लर्निंग जिंदगी भर लर्निंग होती है। अगर हमारे घर में अगर हमारी एक रोटी टेढ़ी बन जाए तो हमें उस पर शेमिंग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा शेमिंग स्कूलों में होती है। अरे फेल हो गए, अरे तुम्हें ये नहीं समझ में आता।
होता है, लर्निंग्स तो कांस्टेंट है, जिंदगी भर इंसान सीखता रहता है। लेकिन स्कूलों में सारा, क्योंकि वो बेचारे सोशल लैडर में, हमारे बच्चे उम्र में छोटे हैं, तो सारे जिंदगी भर जितने एडल्ट्स हैं वो उनको बुली करते हैं एक तरीके से, और इसीलिए उनमें एग्रेशन भी आ जाता है। कल को चल के वो हमारी आगे की नस्लें इसीलिए खराब होती जाती हैं, और वो हम एक विशेष सर्कल में घूम रहे हैं। हमारे को स्कूलों से ये फियर को हटाना है। फियर हटेगा तो एंजाइटी हटेगी, कंपटीशन हटेगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता कंपटीशन की जगह कंपैशन आना चाहिए, कंपटीशन की जगह कॉम्प्लीमेंटिंग आना चाहिए, कि इंसान एक दूसरे को लेके दौड़ने को तैयार हो, राधा देन एक को धक्का मार के आगे दौड़ने को तैयार हो। हमारे को ह्यूमन वैल्यू बेस्ड सिस्टम्स को लगाना है। मॉरल साइंस का एक चैप्टर पढ़ा देने से काम नहीं बनेगा स्कूलों में। एक True. कंपैशनेट सोसाइटी को अगर बनाना है तो वो हमारे डे टू डे के एक्शन में वहां पे दिखना चाहिए। अगर हम एक क्लासरूम में 40 बच्चों में, क्या हम सिर्फ दो स्पेशल नीड बच्चों को एकोमोडेट नहीं कर सकते? देन इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ टीचर्स, स्कूल एंड दोस 40 चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स ऑफ दोस 40 चिल्ड्रन। So let us accept and take a collective responsibility for those two children coming in the class. Absolutely. We have to work on compassion. We have to work on character Absolutely. building, rather than just making them mug up, get scores, and then they don't know what to do with their life. And then they reach a point where they are so frustrated because all they want is success. And when that doesn't come, then there are different kind of challenges that the child experiences along with the parents also. And I think uh, a few schools that I've had the chance to interact, Neena ji, they are now starting to work or have been working to build that character, build that compassion, build that human rather than creating that robot. And I think as parents, we equally have that responsibility to perhaps unlearn a lot of things that we have been carrying as a legacy for years together. Even our generation has been a victim of marks, scores, and with the result, we perhaps don't even remember what we studied in school, or we don't even know what exactly we were doing in school. It's only when we have now understood the whole concept, we are unlearning and then learning new things and trying to comprehend that, okay, the mistakes that were made, how can we make that corrective step for the generations to come. I think वो बहुत ज़रूरी है। और हिमानी जी कह रही हैं कि उनका एक कंसर्न ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की वजह से मेट्रो सिटीज में हैं और वहाँ ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी ना कभी तो अपने होम टाउन लौटना होगा, तब स्मॉल सिटीज भी उनके बच्चों के लिए कोई तो लर्निंग इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए। सो यस हिमानी, यू आर राइट। आई थिंक कलेक्टिवली हम सबको इसकी तरफ वर्क करना है। कई लोग हैं, नीना जी जैसे, ग्रेस हैं, और भी कई लोग हैं जो अलग अलग चीजों के लिए वर्क कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट नीना जी, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी पेरेंट्स supporting their kids who have some different abilities. They don't shy away from bringing them out in the open. And my first experience, to have met a special needs child was amazing. I couldn't make out that the child is a special needs child. The value system was absolutely intact. The culture, the respect, the regard, which would be in any of our neurotypical kids. Had I not read about him, I would have not known that there is some challenge that child has. And I see that child, carving a niche for himself and doing so well. In fact, there are a couple of them who I have hosted also to understand their mindset, and they are, I would say, as intelligent as anybody else. They may have at times radical thoughts, but don't we, even we have radical thoughts? We are not Absolutely. always working like a horse with blinders on कि भाई यही करना है क्योंकि हमें ये बोला गया है. We're all also trying to evolve in the process. So I think it is important that we talk about this. No longer it is a taboo. Let's accept that the situation is there. Let's work towards that environment where we can openly talk about it. And I think that suggestion of yours that kids need to be friends with such children, and vice versa, that acceptance from both sides has to be there. Only then I think all the work that people like you are doing will eventually yield that positive result that we are looking for. Otherwise, they might just stay in research reports.
to read आपके and माध्यम से to. मैं एक टैगलाइन देना चाहूँगी, जो मैं चाहती हूँ कि एक बतौर हैशटैग जो है, इट शुड स्प्रेड ऑल ओवर, दैट बीइंग कंपैशनेट इज कूल, because we are talking to the cool generation. So maybe, that should be, and and everybody can post, or maybe not post. I mean, just be compassionate, yeah, to each one of us. We, first of all, we have to learn to be compassionate to our own self, because we are very harsh. When we look at mirror, everybody is now conscious about weight shaming. There is weight shaming, there is age shaming, there is even cost shaming. Everybody is shaming each other. We have to get out of that also. Let's be compassionate. uh, and I think future is bright. हाँ, एक दूसरे की कहते हैं ना बुराइयां और जजमेंटल होके ये सब करके देख चुके हैं. लेट्स गेट ओवर इट नाउ, लेट्स डू समथिंग Yes, डिफरेंट. कहते हैं ना कुछ yes, नया करते हैं. कुछ नया करते सो हैं. मैंने आपका ये हैशटैग शेयर कर दिया है, बीइंग पैशनेट इज कूल, एंड आई टोटली लव इट. And I think this will be a reminder. That's what Eli is also saying, that it's an absolute wonderful hashtag, a constant reminder. और मैं तो चाहती हूँ नीना जी की ये जो कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक जब तक वो हम नहीं सीखेंगे, आस पड़ोस के लोगों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो जिस तरीके से हैं. और हम वो तभी करते हैं जब हम पे कोई मुसीबत आती है. एंड आई थिंक द बिगेस्ट एग्जांपल वाज कोविड. People actually supported each other. Yeah. The actual concept of the community came forward. But what after that? Back to square मैं one? वही कहती हूँ ना कि मरने के टाइम पे सब जुड़ जाते हैं, जीने के टाइम पे तो जुड़े ना. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. एंड ये रेजिलियंस, ह्यूमंस के अंदर ये रेजिलियंस इतनी स्ट्रांग है. बॉम्बे जैसी जगह में कितनी बार इश्यूज आए हैं, टेरर अटैक, वाटर फ्लडिंग. I've been a part of those the water flooding year when the series of bomb blasts that happened. The way this city came together was phenomenal. But after that, We need to calm. remind each other that inherently we are all good. Absolutely. So, Inherently, we are all good people. We just yeah. forget in the rat race of life. So, absolutely. So, I think let us all come together, support each other, create awareness, but not just do a lip service, but genuinely mean it. Help as many as you can in whichever way you can. And trust me on this, the feeling at the end of the day to be able to do something, whether it is this much or this much, that sense of achievement, I feel would be far more than the millions that you would earn, because that will give you a sense of satisfaction. I would love all of you to earn millions and billions so that I can manage that for all of you. But having said that, I think it is important that we all make ourselves superhumans, or perhaps someone who can just be there for each other. And I think that's what is going to make the difference. So, Neena ji, jate jate, any last few words that you would like to say? No, I think I have, just said it. This अपने ऊपर काम करता जाए इंसान, तो दुनिया बेहतर हो जाएगी अपने आप ही. इतना ही कहना चाहूँगी. जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा. अपने पे काम कीजिए और एक अपने उद्देश्य पे बने रहिए. आई एम श्योर द गुड डेज आर अहेड एंड वील ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. So, this was our small initiative to talk about autism, create a little awareness, talk about it the way it is. And as Neena ji said, she is someone who's known for absolute straight talk. She doesn't mince words. कि भाई जो चीज जैसे है सो है. And I think that is something, Neena ji, I really love about you, because आप बात को तोड़ मरोड़ के नहीं रखते. जो बात जैसी है वो वैसी है. And that's totally appreciative. सो थैंक यू. एंड आगे भी हम ऐसी बातचीत करते रहेंगे इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि हमारा उद्देश्य इसको एक डे को सेलिब्रेट करने का नहीं है कि भाई क्योंकि ये दिन है तो हम इसके बारे में बात करें. लेट्स ट्राई एंड डू आवर ओन बिट इन आवर ओन वेज. We don't really have to go tom-tomming about it, but if all of us do our bit, perhaps the world is going to be a better place to live. So with this, thank you so much, everyone, and take care of yourself. Do wear your mask. Situation is still not absolutely okay. Protect your children and stay safe. This is Ekta signing off for today as the founder and chief strategy officer at the Motherhood Club. Take care and join us on 14th April at 6 p.m. for some
valuable tips by Ila Pachori with regards to plant care. We will share the details with you. Till then, stay safe, take care. Good night, everyone. And thank you, Nina ji, once again. Thank you so much.